जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे मूड में होंगे, अच्छी एनर्जी में होंगे और अच्छा महसूस कर रहे होंगे। मैंने StreamYard से लॉग इन कर लिया है बट आई स्टिल कांट सी यू गाइस, तो मुझे एक बार आई होप दैट आप देख पा रहे होंगे और सुन पा रहे होंगे। और बिफोर हम लाइव शुरू करें और वी टेक राधिका ऑन, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ इफ सुशांत वांट्स टू कनेक्ट एंड से एनीथिंग, क्योंकि आज सुबह से उन्होंने कोई मैसेज नहीं दिया है। बट आई फील दैट अगर वो कोई मैसेज नहीं भी देते हैं तो भी वी फील दैट कनेक्ट एंड वी नो दैट कनेक्ट इज देयर, तो उसमें कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होनी चाहिए। सो लेट मी जस्ट सी if he wants to connect and say anything, and hopefully in the meanwhile you guys will be here. So let's see. Shanti, want to connect and to give a message? Okay, so we have strife and somebody getting caught. So stuck energy और strife energy दोनों की energy जो है वो आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है 5.8. So this is looking like कुछ मेजर डिसीजन हैज बीन टेकन और वो मेजर डिसीजन कुछ बहुत बड़ी स्ट्राइफ जो है वो लेकर आएंगे एंड देयर माइट बी मल्टीपल पीपल कैप्चर्ड और पुट इनसाइड और लॉक्ड और मतलब जो मतलब एक तरह से उनको बसेस में डाल दिया जाता है, रोक लिया जाता है, उस तरह की मुझे कोई कंडीशन आती हुई दिखाई दे रही है। तो लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर कंफर्मिंग। और सो सुशांत का आज कोई मैसेज नहीं है आज सच, बट मुझे ऐसा लगा कि सुबह जो मैंने वीडियो बनाई है दैट वाज आल्सो अ मैसेज दैट केम फ्रॉम हिम, क्योंकि मैं किचन में थी और मुझे कहीं बाहर जाना था एंड इट वाज सच एन अर्जेंसी। इट वाज लाइक अभी वीडियो बनाओ, लाइक राइट नाउ दिस वीडियो नीड्स टू गो। तो मैंने अचानक से, मैं तैयार थी, किचन में थी, काम कर रही थी, भाग के आई एंड आई मेड द वीडियो एंड देन ओनली आई वेंट आउट। सो बना के लाइव करके फिर मैं गई बाहर। तो आई थिंक दैट दैट वाज इनडायरेक्टली प्रोबेबली हिज मैसेज ओनली, बिकॉज हमें अवेकन करने की कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है और वो ली है उन्होंने और वो हेल्प कर रहे हैं हमें। राधिका, मैं लिंक दोबारा से डाल रही हूँ, प्लीज ज्वाइन इन बिकॉज विल हैव राधिका टुडे। और कल विल हैव बिंदु जी, नहीं कल नहीं, मंडे को, कल और परसों प्रोबेबली आई विल नॉट बी एबल टू डू लाइक द फुल लाइव फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो कल और परसों मैं पूरा लाइव नहीं कर पाऊंगी और फिर मंडे से हम विल बी बैक टू जैसे हम करते हैं प्रॉपर लाइफ। एंड मंडे को वी विल हैव बिंदु जी एंड मंडे के बाद ट्यूसडे प्रोबेबली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन द मीन वाइल मैं कोशिश करूंगी जो प्रोडिक्शन वीडियोस है ना, मुझे अगर टाइम मिलता है तो आई विल पुट देम ऑन ऑल्सो। सो राधिका इज हियर एंड लेट्स जस्ट गिव इट ओवर टू राधिका और स्टार्ट करते हैं। चलो राधिका, यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन स्टार्ट। जय हिंद। जय सबसे हिंद। पहले सिंस आई गॉट अ चांस, मुझे याद आ गया कल आपका बर्थडे है, सो इन एडवांस हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, ड्रीम इज ऑल्सो राइटिंग, खुशबू भी लिख रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो कल आप थोड़ी देर के लिए आओगे ना, तो इसलिए आज से ही शुरू कर देते, विश ऐसा करना। मैंने क्या बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं, अगर मैं ना हूँ लाइव पे तो इसका मतलब है या तो मैं होश में नहीं हूँ, बेहोश हूँ, या फिर सुशांत साथ में आके बैठे हैं। उसके अलावा कोई और तीसरा विकल्प ही नहीं है। Yeah. So I hope finally I'm maybe today is the right day to speak. Even I was thinking, उस दिन भी मैं सोच रही थी, even yesterday I was like, even to a small extent, even I was thinking कि जब कल जयश्री जी ने बात की थी, से आफ्टर बैब एंड जो भी आए थे उस दिन, उसके बाद जो भी तीन लोग आए थे, बीट रवि और पंकरी या जयश्री, they have only one side of the story. Like, you know, वो कहते हैं ना, a coin always has two sides. ये शोले का खोटा सा नहीं है. So, one side of the story, मतलब it's only a student's perspective which they have been able to see. Even I was thinking कि कोई शायद कोई parent के perspective में कोई बोलेगा, so then it would have been for me to a teacher will obviously come in the third stage. Anyway, I am, maybe it is in one sense I can say teacher is a kind of mediator between the student and the parent. तो मैं बीच में भी आ गई शायद.
In that way also I can see it. So for me, like मैं बोलती हूँ how into the education system how I came in. मैं अपने बचपन का मैं ज्यादा रेफरेंस नहीं दूंगी because with the things have changed a lot now, and so there is no point of going back to that and saying how it was. Mm. So somehow, like over the years, I had realized that yes, I'm able to, बोलते हैं ना, I'm able to express. Like somebody who's an introvert, उसको कोई chance मिल जाए, पहला presentation, I very well remember how much I was nervous. और मैंने जानबूझ के मैंने क्या कर दिया, मैंने टफ टॉपिक लिया था. When I was in my BSc final year, there was a seminar. मैंने जानबूझ के टफ टॉपिक लिया so that जो भी बैठे हुए हैं बाकी लोग, वो लोग मुझे सुने. मैं अगर नॉर्मल टॉपिक लूंगी तो मेरा नर्वसनेस वहां पे दिखेगा. So that is how, and then slowly I realized that yes, I can express while talking, and then finally life took a U-turn. I never thought that I will come into the profession of teaching. So in 2016 it was a kind of new beginning, and I came into this. I ended up joining a university as a lecturer. वहां पे both research and teaching. So I thought like जैसे मैं presentation देती हूँ वैसे मैं कर पाऊंगी. But then the thing is, as a teacher, when you go now, जब like आपके सामने बैठे होंगे at least 60 to 100 students. That was the strength of the class. 60 से शुरू होके 100, 120 तक हो गया था. So it is not easy कि आप वहां पे खड़े रह के सिर्फ अपना टॉपिक जो भी प्रिपेयर करके गए हो सिर्फ उसको बोलते रहो. You need to connect. You need to understand. Yes. So वो connect होने में, so for me the first month was very difficult. Students बहुत naughty थे. I was like ये क्या ऐसे behave कर रहे हैं, कोई respect नहीं है वगैरह, and I was like that. What happens is after almost by the end of the month, the university says that they are assigning teachers as mentors to the students. तो इसका मतलब like अगर एक क्लास में 60 students है, 50 students are assigned to one teacher. 15 into 4 ऐसे. Okay. So I was like mentoring क्या होता है, because I had heard of mentoring as only like जैसे project का mentoring होता है ना. So at that time they help in doing that project, and that way only I have this. So मैंने जो भी हमारे जो इंचार्ज थे फर्स्ट ईयर में, I was teaching physics, so it was for first year BTech students. So I asked him what is it. So he told mentoring basically is like this will actually help you to connect also with the students. Main thing is ये जो 15 students आपको दिए गए हैं, with those students you will be having a direct interaction. So ये जो direct interaction में है, it's not just about the performance. What he told me was this. Okay, वो मेरे दिमाग में it was stuck from that day itself. It's not just about the performance, but any issues which they are facing. Any issues which the student is facing, they can talk to you. If the interaction gets better, they can talk to you, they will open up. So me being somebody who's like एक काम ले लिया तो अच्छे से वो करके देना ही है. So out of like 100 plus faculties, at least 6 to 7 of us, we took this thing very seriously. And all students हमें assign किए गए थे. We were obviously discussing about the marks and other things, जो भी उनका performance जा रहा है, class में जैसे behave करते हैं, what are the things, and वो regular discussion वो तो होता ही रहता है. And then comes like different stages. Different stages in sense, I will say that. One girl, like वो actually मेरी सिर्फ स्टूडेंट थी, वो मेरी ये मेंटी बोलते हैं, स्टूडेंट को मेंटी बोलते हैं. अंडर द मेंटर तो you're a mentee. Not even mentee. One so regularly she was हमारा क्लास actually 8:45 को शुरू होता है. Regularly she was coming late by 10:15, 10:30. Suddenly ये हो रहा था, एक हफ्ता she did this. So and she felt that she can open up to me. She came to my cabin and she started crying. तो मेरे को क्या हुआ? Why every day you are getting late? What happened? What do you want to talk? क्या बात? She says that मेरे घर पे मेरे parents झगड़ा करते रहते हैं.
हर वो झगड़ा करते रहते हैं. सो मैं उसी में फंसी रहती हूँ. आई एम द एल्डर सिस्टर. मेरा मेरा एक छोटा भाई है. तो वी फाइंड वेरी वेरी डिफिकल्ट एट होम. सो वहां पे दैट इशू, शी वाज फेसिंग दैट इशू, एंड मैंने कहा to try talking to them. She's like they are not even in the mood to talk. So then उसके बाद like the okay, let me come to the mentees के इसमें मैं बोलती हूँ. तो आज तक हमने जो बात की ना rat race and other things. The resultant of this, I will tell you what happens is, if as a teacher we have to, and even though we don't wish, we have to categorize the students into three. That is, those perform like अच्छे से perform करते हैं, those who get more than 80 or 75 and 80, and then comes between range and हाँ average, and then उसके नीचे. Poor. Now, what happens is there was this one girl. वो रोज क्लास में आती है. She is there on time. In every class she is there. She sits. She is. हमें लगता है कि ऐसा टीचर, हमें लगता है कि वो है वहां पे, वो सुन रही है सब कुछ. She's sitting there and listening. Listening. Again, I'll put it in a double quotes. We think that she's listening. Okay. Now, what happens is, फर्स्ट एग्जाम एज सुन एज लाइक अच्छा कॉलेज शुरू हो गया, अभी तो एंजॉय करने का टाइम है, यूनिफॉर्म नहीं पहना है, सो वी आर इन द कलर ड्रेस, दिस इज टाइम टू एंजॉय, डू व्हाटएवर. तो फर्स्ट एग्जाम जो आता है विद इन 1.5 months, दे मोस्ट ऑफ देम परफॉर्म पैथेटिकली. ओके, सो आई विल से 60 स्टूडेंट्स में से 40 तो ऐसे ही परफॉर्म करते हैं. और तो फर्स्ट एग्जाम में तो यू कैन गिव दैट थोड़ा सा ये दे सकते हो. हाँ, leverage you can give, and then when it comes to the, but then okay, you have to, वहां से तो आगे बढ़ पाओगे ना, तो एटलीस्ट सेकेंड एग्जाम में अच्छे से कर लो. In her case, at least 3-4 exams happened. Every exams, be it except even in English, I said you maybe yeah, not even a single subject, I would say. Even English, any even simpler subjects, any simpler subjects जिसमें आसानी से स्कोर कर सकते हैं. She was not able to score in anything, and she used to come with single digits. ठीक है. So now at the end of the semester, what happens is, if you don't go above a particular percentage of marks, so you are not eligible to write the final exam. तो वो issue पे आ जाती है. Attendance wise she is there, she is perfectly fine, but marks wise she is average निकालो तो भी single digit में है, कुछ नहीं कर सकते. So finally we had to call her parents. So her mother came. Initially she was obviously hesitating to tell her mother. Finally her mother came, and I talked to her. She said, मैंने बोला, this is the thing, we have been thinking that she is there in the class, but वो कर पा रही है, क्या हो रहा है हमें नहीं पता. So many exams we have given, multiple chances have been given, नहीं कर पा रही. So now parents के साइड में से ये आ रहा है कि this mother, she is actually a state government employee, and says that her daughter actually उन्होंने जो 12th जब पास की थी, उसके बाद like उसमें अच्छे से score, she had not scored much. Okay, so not scored much in 12th, so the only option left for her mother was to get her admitted in management quota in somewhere. Okay. State government employee, बच्चे को मैनेजमेंट कोटा में डाल रही है, एंड यहाँ का फीस जो है, द प्लेस वेयर आई वाज वर्किंग एट दैट टाइम, इट वाज 3 lakhs per year. ओके, सो शी सेड 3 lakh per year का लोन है. मैंने लोन ले लिया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती. एंड व्हाट हैपेंस इज, मैंने पूछा, एटलीस्ट उससे बात तो करो, क्या हो रहा है. आई मीन वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग. समहाउ शी हैज टू इंप्रूव हर परफॉर्मेंस. इट इज लाइक आपके लिए लोन चुकाना मुश्किल हो रहा है, because your salary may not be up to that level. Yeah, obviously we all understand that thing. See, I was also working, right? मुझे भी पता है कि कितना मुश्किल होता है. So she was saying, तो मैंने पूछा कि अगर वो सच्ची में उससे नहीं हो पा रहा है, आपने मैंने उसको पूछा, why did you get her admitted for BTech? She gave was, क्योंकि ना बीटेक खत्म हो जाएगी तो उसको अच्छे से रिश्ता मिल जाएगा. If I had given her for arts या science या BCom,
रिश्ता Yeah. नहीं हो पाएगा. I felt like so bad, कि आप, the different way in which, people see कि मेरा बच्चा ये करेगा तो उसको ये होगा, like Mhm. top हाँ, level. the goals, the aims. There is that attachment, कि okay, somebody thinks that okay, ये इतना बड़ा ऑफिसर बनेगा, ये इतना बड़ा मैनेजर बनेगा, या इतना बड़ा इंजीनियर बनेगा, या इतना बड़ा डॉक्टर बनेगा. Here there was somebody who was saying that नहीं, उसका रिश्ता अच्छे से आ जाएगा. So I felt very bad, and unfortunately, this is a bitter truth of private institutes. I'll tell you this one thing. अगर किसी इंस्टीट्यूट या स्कूल या कॉलेज के बारे में पूरी सच्चाई जानी है ना, उनके टीचर से पूछो, Hmm. वो बता देंगे. तो Hmm. याद क्या होता है, within 1 month of your joining in the first year, you are forced to pay the first year amount. Hmm. अब ये say by the end of the semester या by after some time the student feels कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझे छोड़ना है. Hmm. तब इन लोगों का condition, what is the condition? You have to pay the amount of the entire course. Oh God. अगर in her case it was a management quota, so 3 lakh per year था, that means total 12 lakhs the mother has to pay. So there was no option that let her continue in whichever way she can do. Hmm. And this has happened to many others also. I will say there are people who don't want to do a particular career and they are put in that one. उनको कुछ और करना होता है, pilot बनना होता है या Hmm. chef होता है. But Hmm. they all get stuck into this because um, somehow the parents feel that this is a career which is meant for my kid. Okay. Hmm. Hmm. Like this, so many things happen, and I don't want to say all the. I'm not saying ki. I will say like there are these two sides in the sense there is a mistake happening on the student side and also on the parent side also. Like Yes. if अगर आप बचपन में अगर if you're trying to get your child admitted into a new school, you will try to inquire about the school from your neighborhood. Hmm. The same thing you should actually do when you're आगे स्कूल हो या कॉलेज हो या कहीं पे भी आप हाँ, कोई कोई भी कहीं पे भी आप डाल रहे हो. It's Yes, a three-way thing ना. It is a parent, the schooling. हाँ, actually Manisha, you're right. Schooling सिर्फ business हो गई है ना. That's the yes, problem. yes, And then exactly. एजुकेशन वो एजुकेशन फैक्ट्री बन गई है. it's just Yeah, nothing else. I'll tell you in छिछोरे का वो सीन आता है ना, जब when they realize that we ended up pressurizing our child कि and वो बोलते हैं ना कि लाखों लोग बैठते हैं इंटरव्यू ये एग्जाम में, लाखों लोग बैठते हैं एग्जाम में, सिर्फ almost thousands are getting admitted into whatever that. हाँ, Hmm. और उसके बाद उन बाकी लोगों का क्या होता है? So there is that issue, and I will say like now what happens? Okay, let me come to the solution wise. I will tell you. So these वो अब obviously we have seen multiple movies and Kota Factory करके एक show भी है YouTube में. You will see that what is happening there. Now I'll tell you just this is one thing very critical about performance. I will tell you what is happening. So साउथ में जो है आंध्र को माना जाता है एज द बेस्ट प्लेस फॉर जैसा माना जाता है the students who come out of Andhra Pradesh are very very brilliant. And there are two schools, Chaitanya and Narayana. These are the famous ones in the south, and सब सारे रैंक होल्डर्स आंध्र थे, सारा ये वैसे. नाउ ये 95% लेके आते हैं जो भी उनको करियर करने के लिए. And what happens is you ask a simple question. मैंने simple सा एक सवाल पूछा था, what is a semiconductor? They didn't know. Nothing. Exactly. It was मैंने पूछा what is a metal? Example तो दो. All these things, simple things, पूछने जाओ ना, even basic things they can't answer. Like how yesterday Jayashree was referring to concepts. I will tell you what happens. This is a major thing which happens in coaching institutes and these hi-fi schools all throughout the country.
वो लोग क्या करते हैं, they train the students with respect to a particular exam. Like suppose if like obviously the majority of Indians think that engineering and medicine is the only thing to do. वो एक Okay. थॉट लेके और उसी एक पे हाँ हाँ रट्टा तो फिक्सेशन। हाँ नहीं होता ये है कि वो क्या सिखाते हैं, दे विल टीच देम न्यूमेरिकल्स। वो सिर्फ वो जो भी यू नो आईआईटी के एग्जाम के या नीट एग्जाम के जो मल्टीपल पेपर्स रहे होंगे पिछले सालों के, उसको लेके उस क्वेश्चंस को उससे वो क्वेश्चन टीच हाउ टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहाँ पे नंबर चेंज होगा तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना सीख लो। They don't teach concepts at all. And unfortunately the parents end up paying so much money to such schools thinking that हमने अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में डाल दिया। हाँ, but the truth is वहाँ पे कुछ और ही चल रहा होता है। Now okay, let me come to this. I will come to what happened during lockdown. So this how this mentor system helped to an extent, I will say, and limitations also come. So during lockdown, suddenly it was, it all becomes like there were means also कि 24/7 हमारा नंबर जो है वो पब्लिक नंबर बन गया, टीचर्स का नंबर बन गया। हाँ, because you have to connect not just with the school या college जहाँ पे आप पढ़ाते हो, you have to connect with the students, you have to connect with your parents, so many, and they will call anytime, they will ping you anytime, and I was not hesitating in that sense, I was willing to help also. तो पहले लॉकडाउन के टाइम पे बीच में से we had to conduct online exams. So exam चल रहे थे, and one student, he was missing the classes, he was not attending the exams also. तो उसने मेरा सब्जेक्ट नहीं लिखा था, फिजिक्स नहीं लिखा था, सो आई आस्क्ड उसके जो भी असाइनमेंट थे, मैंने उनसे पूछा क्या बात है। she contacts him, somehow she contacts him, and then he has sent her a WhatsApp message, she forwarded me that WhatsApp message. उसने लिखा है मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, मैं I am going to finish my life. This was like a repeated message which was coming from him, and then amazing, आप जिस बात में बोल रहे हैं, I will come to that also. So these things, she was like, this is a consistent message coming. Even I contacted same, ma'am, I can't do anything, मुझे नहीं होगा, I am going to finish my life, I am not in a mood for this thing, I am not in a mood for this thing. I said, I will to your parents. No, my parents are not visiting, I am staying with my grandmother. I said, okay, give to your grandmother, I want to talk to your grandmother. He was not, वो तैयार नहीं थे। Okay. Now what happened is when it becomes critical, तो मैं अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रही थी, उसको समझाने की कोशिश कर रही थी कि don't do this, try to focus, already ले लिया है, you have already come into this thing, somehow you कुछ तो करके थोड़ा सा तो लिख के you do something. But finally what happened, it came to a stage, his messages used to come like anytime, रात को anytime, say that I'm going to end my life. So finally what happened is it went out of our control, like out of our limit, not our control, out of our limit. Like हमारी भी एक limit होती है, आप how तक आप involve, interact, how much you can get into this matter. So then comes this concept of counselors. Counselors मतलब क्या है? The moment if I say counselor, everybody think only अगर जो पागल है सिर्फ उसको काउंसलर के पास लेके जाओ. No, nothing like that. His thing was actually a very simple problem. So there was this the one particular counselor, she was actually वो intern थी, she was not a highly qualified person. तो वो intern, तो वो जो intern थी वो she contacted him and उससे बात की, and then she told us what was the situation. तो इसका जो है 12th में एक breakup हो गया था, and वो जो girlfriend है, she used to blackmail him in a similar way कि I am going to end my life, she will take photo of, ऐसे ही वो acting करती है कि का photo लेके she will forward that thing to him and she will try to grab attention. So he has actually learned that thing from her. How to grab attention. Tell
tell somebody that I'm going to die, obviously the other person will get concerned for you. So ये attention grabbing का वो ये उसमें आ जाता है. So that was his only, that was his thing कि breakup हो गया, मेरा मन नहीं है कुछ नहीं करने का. और ऐसा होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ. हाँ. Yeah, so yes, so there are things which are out of the limit of a teacher. So mentor के level पे हम जितना कर सकते हैं, we do it to an extent, and that is when the counselor comes. So I will tell 3 important solutions जो मैंने लिख के रखे. मैंने actually जब points बनाए थे परसों मेरे solutions ही लिखे थे. First thing, start opening up to parents since childhood. The kids should start it up. It's opening up whatever it is. Like, and parents also, I would say, ये मत बोलो कि हमारे पास time नहीं है. It's your child. Take at least minimum half an hour to nikalo. I understand that most of them are into, a tough profession, which would have been like, which need them to be there for a longer duration. Take at least half an hour with your child. Sit with your child. It's very important. Very important. Yes, it is very much important. And one more thing is, सिर्फ बच्चों की नहीं सुनना है, and अगर बचपन से वो आदत डालेंगे, they will get to know the situation of the parent also. In what situation both ways will work out. In both way it will work out. Whether कि हम okay बड़े-बड़े ड्रीम करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, but can my parent afford it? Can my parent take care of it? Both ways understanding will come. अगर मतलब even if they talk for 30 minutes like every day, एक understanding आ जाएगी. Yes, and this this, as I told, this mentoring thing जो हम कर रहे थे, so this was out of 100 plus faculties, only 6 or 7 were doing it seriously. लोग नहीं कर रहे थे. And at one stage we are also under limitation कि हमें like higher level से वो support नहीं मिलती है कि you can go ahead. So I think like good things at times, when good things don't get the support, you have no option but to. So this is one thing which is very much required, that teachers can become mentors. Guru ka actual meaning is just I was attending one Bhagavad Gita class, वहाँ पे ये बोल रहे थे, Guru का actual meaning is, Guru is darkness and Guru is light. So somebody who removes darkness and brings you into light. So जरूरी नहीं है that you teach only the subject, make them aware of just a subject. You can do more than that. So voluntarily, हम लोगों ने voluntarily की थी. From our side, we understood that okay, as a mentor, there are some things which we can do. And so this is something which can be implemented in school level itself. I would say it is required at least from class level, class 5, because nowadays the things are getting more and more advanced. Absolutely. So at least from class 5, if this mentoring thing can come. And another thing is, at least one counselor is required per school, one professionally qualified counselor. Counselor in the sense, not necessary, like when there are issues which, say, if a student is hesitating, if he is not able to, like, घर पे बात नहीं हो पा रही है, से बात नहीं कर सकता, तो at least at least teachers say no. And what I'm saying is, when things are out of the teacher's limit also, then a doctor or a professionally qualified counselor, counseling नहीं है कि आप पागल हो. That is a very bad understanding which majority of the people are having. That doesn't mean anything. A counselor can help you in any way. Absolutely. So उनको psychology समझ में आती है, so they are able to help in a much better way. Just few more points I would like to share, but I think if I can do it after the prayer, it will be helpful and amazing, especially because Amazing was talking about 2023 NEP. Okay, so what we'll do is we'll do the prayer, and after prayer you can share. We can do that. Like 2-3 points is we can go ahead with that. Okay. Yes. Okay, so let's take out the prayer energy. And let's see what we need to do today.
Okay, so what prayer we are going to do today is also going to be little different. आजकल हम बहुत अलग prayers कर रहे हैं सुशांत. नहीं मतलब I think he's indicating that only because मैंने कल सोचा था फिर मैं भूल गई. तो what prayer that we are going to do today, आज जितनी देर भी हम prayer करेंगे, first in the beginning थोड़ी देर के लिए, मतलब जब तक आप कर पाए 5 मिनट 7 मिनट 2 3 4 5 जब तक गिनने की जरूरत नहीं है, just do it and breathe in light. उस लाइट को अपनी बॉडी में स्प्रेड होने दीजिए. ब्रीद आउट ऑल द डार्कनेस. जब आप ये प्रेयर कर रहे हो, बेसिकली आप और कुछ नहीं कर रहे हो, आप ब्रीद इन कर रहे हो और ब्रीद आउट कर रहे हो और सांस अंदर लेके थोड़ी देर सांस को होल्ड कर रहे हो और फिर सांस छोड़ रहे हो, ठीक है. लेकिन वाइल डूइंग ऑल ऑफ दैट आपने ये करना है कि जब आप ब्रीद इन कर रहे हो तो वो लाइट के साथ साथ आप ओपन अप कर रहे हो पॉसिबिलिटीज के लिए, पर्सपेक्टिव्स के लिए, नई एनर्जीज के लिए, नई बिगिनिंग्स के लिए और अबंडेंस या अच्छी चीज या अच्छे लोग या अच्छा सर्कल, सब चीजों के लिए. तो जब आप सांस अंदर ले रहे हो तो आपने इस तरह से समझना है या सोचना है कि सब कुछ जो बहुत अच्छा है, अबंडेंस है, लाइट है, रोशनी है, वो सब कुछ उस ब्रेथ की एनर्जी के साथ आपके अंदर जा रहा है. आप उस सारी चीजों को अपने अंदर ले रहे हो. जब आपने होल्ड होल्ड करना है ब्रेथ, उस वक्त आपने उस चीज को महसूस करना है अपनी बॉडी में सेटल डाउन, अपने आसपास में एक लाइट, एक रोशनी, वो सेटल डाउन होते हुए. और जब आपने ब्रीद आउट करना है तो आपने ऐसा इमेजिन करना है कि जो भी आपकी लिमिटेशंस हैं, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जो भी आपने पास्ट अपना अपने साथ जोड़ के रखा है, जो भी बुरे एक्सपीरियंसेस आपने जोड़ के रखे हैं, जो भी बुरे लोगों को लेकर जो माइंडसेट थॉट्स आपने जोड़ के रखे हैं, आप वो सब ब्रीद आउट कर रहे हो. और बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर प्योरिफाइंग योर बॉडी, योर माइंड एंड योर सोल. तो आप अपने बॉडी, माइंड और सोल को प्योरीफाई कर रहे हो. एक तरह से बहुत जरूरी है बिकॉज ओनली प्योर सोल्स और पीपल विद प्योर बॉडी, माइंड एंड सोल विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट युगा. तो नेक्स्ट युग में वही जाएंगे जो प्योर बॉडी, माइंड और सोल में होंगे. रेस्ट एवरीबडी विल लीव. तो आई थिंक दैट दैट्स व्हाट ही वांटेड अस टू डू. और मैं भूल गई थी, अभी मुझे याद भी नहीं था क्या करना है, बट मैं जब कार्ड शफल कर रही थी इट जस्ट केम वेरी क्लियर टू मी. तो ये मेडिटेशन करेंगे आज हम. और लास्ट में जो हम ये करते हैं फास्ट फास्ट, उसमें वी विल जस्ट थिंक अबाउट वो जो ओपन एनर्जी है, अब वो प्योर एनर्जी है, उसमें जस्ट इमेजिन कृष्णा, जस्ट इमेजिन सुशांत, जस्ट इमेजिन हिम, जस्ट आउट देयर, हम सबके साथ, हम सबकी एनर्जी में और हम सबके सामने. ठीक है. सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. ठीक है. सो स्टार्ट करें. आर वी रेडी? डू वी स्टार्ट? तो ये बहुत अच्छी क्लिनजिंग होगी, बहुत अच्छी क्लियरिंग होगी और बहुत अच्छा बैलेंस और ओपनिंग अप और लेटिंग गो, बहुत सारी चीजें एक साथ हो जाएंगी. एंड दिस विल हेल्प यू विद योर फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, हर एक चीज के साथ. सो लेट्स डू दैट ओनली. और ओके, चलो वी आर रेडी. चलो लेट्स जस्ट स्टार्ट दैट.
Okay, so डेथ एंड फ्लो, राइट, एंडिंग ऑफ सेल्फ। सो बेसिकली ये मेडिटेशन का ही कार्ड है। अगर आप इस कार्ड को देखें तो ये इंसान मेडिटेट कर रहा है यहाँ पर, और मेडिटेशन में क्या कर रहा है, देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग वेयर यू आर लेटिंग गो ऑफ द ओल्ड, ऑफ व्हाट इज नॉट नीडेड, एंड वेयर यू आर गेटिंग इनटू योर लाइफ द फ्लो, द ट्रूथ ऑफ फ्लो और द एक्चुअल फ्लो। तो मतलब जब से हम मेडिटेशन कर रहे हैं, सुशांत हर रोज कॉन्फर्मेशन देते हैं, एंड आई थिंक दिस इज येट अनदर कॉन्फर्मेशन, क्योंकि मेडिटेशन है, फ्लो है, विश फुलफिलमेंट है, और डेथ है जो कि लेटिंग गो और ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। सो एक्चुअली परफेक्ट कार्ड्स फॉर व्हाट मेडिटेशन वी जस्ट डिड। और दो चीजें बिफोर आई गेट राधिका बैक ऑन। एक आज पीहू को स्कूल से चॉकलेट मिली थी। मतलब मैं इसको चॉकलेट देती नहीं हूँ, तो जब बर्थडेज होते हैं तो, और उसको नेल्स खाने की आदत हो गई थी, तो बहुत कुछ ट्राई किया, नथिंग वर्कड। देन आई टोल्ड हर दैट चॉकलेट तभी मिलेगी जब मम्मा नेल्स काटेगी। तो अब उसके नेल्स खाना बंद कर दिया उसने, क्योंकि नेल्स के चॉकलेट के चक्कर में नेल्स बढ़ रहे हैं। तो जब नेल कट होता है तो उसको एक पीस चॉकलेट का मिलता है। तो दैट्स हाउ आई दैट इज व्हाट वर्कड विद हर। तो गुस्सा, डांट, तेल लगाना, ये वो सब कुछ काम नहीं किया। आज ना शी वाज ईटिंग द चॉकलेट, और शी लाइक, मम्मा क्या आप खाओगे? मैंने बोला नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, मम्मा चॉकलेट खाती नहीं है। नहीं नहीं, जब सुशांत आएगा तब तो खा ही लोगे। आई वाज लाइक अच्छा। देन आई गॉट like my mother-in-law was wearing something, and वो पूछती हैं इससे हमेशा, पीयू से, कि मैं कैसी लग रही हूँ, बताना मुझे, दादी कैसी लग रही है। शी केम एंड मेरे कान में पूछती है, ये जो कलर पहना है ये क्या सुशांत को पसंद है? मैंने बोला हाँ पसंद है। फिर मुझे भी पसंद है, फिर आप बहुत अच्छे लग रहे हो। तो नाउ डेज उसको अगर कोई भी चीज उसको लेके देनी है, उसने कोई भी ड्रेस लेनी है, उसने कोई भी कुछ भी करना है, एनीथिंग, फर्स्ट क्वेश्चन शी हैज इज कि ये जो मैं लेने लगी हूँ क्या सुशांत को ये पसंद है? और अगर मैं उसको कॉन्फर्मेशन दूंगी कि हाँ उसको पसंद है, तब वो स्कूल की सॉक्स आई ना, देवर ग्रे इन कलर, लाइक मुझे नहीं पसंद ये ग्रे कलर, मैं नहीं पहनूंगी। मैंने कहा पर सुशांत को तो अच्छा लगता है। अच्छा, फिर तो बहुत सुंदर लग रही है, मैं पहनूंगी। तो इट इज सच अ कनेक्शन दैट शी शेयर्स विद हिम, कि मतलब एनीथिंग फॉर हिम वाली एनर्जी जिसके लिए हमने वो किया है, साइन अप किया है, राइट, पिक्चर उसकी भी है कोलाज में, दैट एनीथिंग फॉर हिम, एंड दैट्स हर एनर्जी ऑलरेडी। सो आई जस्ट फेल लाइक शेयरिंग दिस, तो मैंने शेयर किया। और यस राधिका, यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस। ये जो एनीथिंग फॉर हिम, ये सरेंडर वाला जो है ना, उसको मेरा टेस्ट चल रहा है डायरेक्टली। गुड, वो टेस्ट लेते रहते Yeah. हैं। I figured it out yesterday that this is the thing which is happening. So anyway, so coming back to what I was saying. So this is one more thing which, so what I said, as I said earlier, जो भी स्कूल या कॉलेज या जहाँ पे भी आप एडमिशन के लिए सोच रहे हो, उनका अच्छे से क्रॉस वेरिफिकेशन करो. That is very much required, because I will tell you, most of them are there for business, especially because somebody thought that we will privatize schools. वो privatization के बाद ना, it has become a super mess. हाँ, it's all business, it's nothing else, it's no Only, study, no matter which school, which university, which बच्चों के स्कूल भी छोटे छोटे नर्सरी, LKG, yes, it's all business. correct, exactly. And I will tell you, say आपने अगर डोनेशन दिए होगे ना, तो गए, I mean that is like it. पैसे दे रहे हो तो वो तो गया, जो भी आप दे रहे हो पैसे उसमें तो वो तो गया. And so that is one thing. And one more thing is, this is for both the student and the parent. Like if a student says, because सबको कंप्यूटर साइंस इंजीनियर करना है, सबको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो ये वाला इंजीनियर बनना है या कुछ और बनना है. Think about the long term, उसमें क्या हो सकता है, what is the situation about it in long term. Now at least, you know, there is already a generation which was studying and which is like abhi, like this is more than 20 years since the software industry has happened. The reality of software industry, I will tell you, the people who take computer science engineering, you know where they end up being. अगर आपको गवर्नमेंट जॉब्स मिल रहा है, then you are obviously safe and secure till the age of 60, until the retirement age. State government या सेंट्रल गवर्नमेंट का मैं बोल रही जॉब.
You're into private companies, which is what is there in majority in our country. If you Majorly, absolutely. go for private jobs, and especially if you're a software engineer, कितने सालों तक कोडिंग करोगे, कितने सालों तक ये करते रहोगे? There is the reality of software engineering, as a software engineer, the life of a software engineer is that there is a saturation limit at up to which you can do that coding and do that thing. 40, 45 tak, you by that age you are done. You are not able to continue unless by then you would have done some certification courses, yeah, MBA, or uske baad, if you are able to become into a manager level and then go to you are able to have your own company, go to a very high position. Unless you are an Elon Musk who can run multiple companies, unless you come to that stage. So unless you come to that stage now, it is not possible, because I will tell you my क्लासमेट्स जब हम एमएससी कर रहे थे, सब एमएससी फिजिक्स कर रहे थे, उसके बाद फिजिक्स में सिर्फ आई कंटिन्यू एंड अदर्स दे ऑल वर लाइक जो भी मिल रहा है उसमें चलेगा, एंड टू ऑफ देम दे टुक सॉफ्टवेयर जॉब. Okay. And within 10 years of doing that thing, they started approaching me. So by then I was working at ISRO. They started approaching me. They were like, हमें वापस जाना है साइंस में, हमें पीएचडी करना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है. Because they already were exhausted by then. They were getting exhausted. One major mistake I will say, this is, there are many things which can be done by the government. One major mistake which has been happening since decades is कि कुछ चीज को पॉपुलराइज किया जा रहा है. किया गया है last 40 years और से 40 around 30-40 years कुछ चीजों को अलग हाइक दे दी गई है because of different political reasons behind it. Exactly. I will tell you one example. Most of us like blaming movies for the bad influence of drugs and other things. Okay. किसने कहा कि इंजीनियरिंग बेस्ट, किस मूवी ने कहा था इंजीनियरिंग बेस्ट प्रोफेशन है? किस मूवी ने कहा था मेडिसिन बेस्ट प्रोफेशन है? इफ आई गो बैक टू ओल्ड बॉलीवुड मूवीज, दे यूज्ड टू लाइक या तो वो डॉक्टर या एडवोकेट या पुलिस ऑफिसर को बड़े अच्छे तरीके से दिखाते. At that time, the profession used to be in that way. I mean, most of those movies were showing that. See, doctor ki value, if you're a good doctor, your value is there until, as long as you are able to, आप वो कर पा रहे हो 70-80 जितने साल तक रहोगे. If you are a good doctor, you remain as a good doctor. You are medicine का profession बनता है. I will maybe engineering was publicized for this reason, क्योंकि IITs were started. The regional colleges were started. NITs जो बोला जाता है. हाँ, exactly. Before that, वो ये नहीं था. Even when those things were started, at that time, the focus was on mechanical engineering and electronics engineering. अगर मैं सच बोलूं, आज भी अगर गवर्नमेंट जॉब्स, आज स्पेस इंडस्ट्री या डिफेंस इंडस्ट्री के गवर्नमेंट वाले पोर्टल्स में जाओगे, more intake is for those who do electronics and mechanical, not computer science. कंप्यूटर साइंस का कम होता है क्योंकि वहां पे डिजिटाइजेशन ज्यादा हुआ नहीं है. अगर आपको प्लेन बिल्ड करना है, यू वुड प्रेफर हैविंग अ मैकेनिकल इंजीनियर एंड एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हु कैन डू द सिस्टम्स. वो एक तरह से ना, if I put it, Radhika, every profession has limitations and every profession has a saturation point. अगर हम डॉक्टर्स को एक साइड पे रख दें तो मुझे लगता है कि बाकी जितने भी प्रोफेशन है, समवेयर दे हैव लिमिटेशन, दे हैव लाइक अ सैचुरेशन पॉइंट. एंड एक्चुअली द क्रक्स इज, द बेसिक लाइन इज कि जब भी आप कोई प्रोफेशन चूज करो तो थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म एंड देन डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू. एग्जैक्टली. ये बाकी लोगों की तरह रैट रेस में घुस मत जाओ कि नहीं ये करना है वो करना है. इवन आई टेल यू दिस थिंग, these two courses are publicized as उसको advertise किया गया है. I use the word advertise only. Engineering and medicine are the only professional courses. तो बाकी सब क्या है? प्रोफेशन नहीं है. वो एग्जैक्टली ना, वो उस तरफ मैंने वही तो बोला कि वो एग्जैक्टली देयर वाज अ बिगर पॉलिटिकल मोटिव बिहाइंड इट. और ये अंडू एकदम से नहीं हो सकता. इट विल टेक नेक्स्ट 10, 20, 30 years टू बी अनडन. एंड देन तब तक किस तरह की टेक्नोलॉजी में होंगे हम, किस तरह की वर्ल्ड में होंगे हम, क्या होगा उस वक्त, वी कांट से एट दिस पॉइंट इन टाइम. इट इज गोइंग टू बी वेरी
Yeah, and that is, I mean, there are many steps which the government can take. That is, one thing is to minimize this kind of publicity. हर हम्म बार मीडिया में क्यों ये जेई एग्जाम या ए ट्रिपल के एग्जाम या नीट एग्जाम के बारे में, उसके बारे में क्यों मीडिया में आता है, बाकी हम्म एग्जाम्स के बारे में क्यों नहीं? हम्म यूपीएससी का जब रिजल्ट आता है तब आता है उसके, आई मीन देर आर ओनली व्हेन द यूपीएससी रिजल्ट कम, वाओ ही इज द टॉप स्कोरर, दैट्स इट. उससे हम्म पहले ज्यादा नहीं होता है. हम्म Even for that, it has been brought down to a small extent, I will say. हम्म There are other jobs also, so it should, from the government side also, it should happen कि आप you don't narrow it down to only a very few professions, and ऐसा मत बोलो कि these are जिंदगी का मतलब ये है Absolutely. कि हमें ये यही एग्जाम लिखना है, सिर्फ आईएएस बनना है. आईएएस बनने के बाद क्या? आज Absolutely. today वो only I saw long one tweet, one IAS rank holder was caught for corruption. वही वो लॉन्ग टर्म आपको सोचकर और माइंडसेट. सो बेसिकली दिस इज अबाउट कंडीशनिंग ऑफ अ चाइल्ड व्हेन वेदर इट इज थ्रू अ पेरेंट, वेदर इट इज थ्रू अ टीचर, वेदर इट इज थ्रू Yes, अ काउंसलर. इट इज बेसिकली इट नैरोज डाउन टू द कंडीशनिंग ऑफ द चाइल्ड कि आप उसको yes. कैसे प्रिपेयर करते हो एंड कैसे कंडीशन करते हो. एग्जैक्टली, सो दैट हर बार बोलते हैं ना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसकी सॉल्यूशन जो है वो बेसिक, जो रूट में होता बेसिक है. रूट में, हाँ रूट में होता है वो. रूट में जाओ तो वहां से यू हैव टू डू द करेक्शन फ्रॉम दैट वन. एंड एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. और saying that thing, I will say, अभी I know Amazing has been writing about NEP, National Education Policy. So the last semester which I was doing there before leaving my job, they said that हमें orders आए कि NEP implement करना है. Okay. So they wanted to implement it to a particular set of students. So there were 600 students of a particular 600 students. सारे तो ये होता क्या है कि NEP gives you an option to introduce this, जैसे arts हो या music या literary या any other forms of एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करिकुलर extra curricular, जो हम extra curricular बोला जाता है, it brings into the curriculum. That means it's made into a credit course. पार्ट ऑफ. तो हाँ, तो उनको उसमें like it will give you some credit and it will give you some marks and it will help you to move forward. स्किल Now, इम्प्रूवमेंट, स्किल even लर्निंग. including sports. Now what happens, I will tell you. So there are many things I will tell you which the government has to look into the ground level कैसे होता है. So यहाँ पे क्या हुआ, they were like, we have been asked to implement this thing from this year, तो हमें ये करना पड़ेगा, हमें ये करके दिखाना पड़ेगा. The main thing is the institute will only see in this perspective, हमें ये करके दिखाना है. और वो दिखाने में डाटा जो है कुकअप किया जाता है. दैट इज द ट्रूथ. दैट इज द लैंग्वेज व्हिच वी यूज, कुकअप मतलब बना के दो. सो व्हाट हैपेंड इज, ये जो 600 स्टूडेंट्स थे, उनको they were given like 7 to 8 options. And पेपर कैटेगरी से म्यूजिक के लिए एटलीस्ट 100 स्टूडेंट्स had given their names. Okay. So it is not practical to conduct a music class, regular music class for 100 students at a stretch. तो वो हो नहीं रहा था, अच्छे से नहीं हो रहा था. And because it was like उनको 1 credit बोला गया था, that means only 1 hour per week. तो वो it was only for 1 hour. बहुत मुश्किल होता था. उसके बीच में एग्जाम्स कंडक्ट करो, असाइनमेंट्स ले लो, एज यूजुअल. होता है कि व्हाट डू दे डू, हाउ मच कैन यू नो. और वो भी 100 में I will tell you hardly 30 students would have attended these things seriously. वो आई थिंक राधिका, इसलिए क्योंकि हमें चूज करना था, हमने चूज कर लिया. हमको दिखाना था, हमें चूज करना है तो हमने चूज कर लिया. बट सी दैट विल हैपन. उसका इम्पैक्ट जो आएगा ना वो टाइम के साथ आएगा, वो एकदम नहीं आएगा, क्योंकि कंडीशनिंग माइंडसेट अभी वही है एंड देन समथिंग इज इम्प्लीमेंटेड. ये अगर आज इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है विद वट एवर फॉलआउट्स इट हैज या वट एवर लूप होल्स इट हैज, उसके साथ में अगर आज इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, इसका इम्पैक्ट हमें 5 से 10 साल में पता चलेगा. बिकॉज अभी कंडीशनिंग वही है, माइंडसेट वही है. तो कंडीशनिंग और माइंडसेट वही है, तो जो भी कंपलसरी हुआ उसमें से कुछ चॉइस तो कर लिया, बट दे विल नॉट बी एबल टू गिव इट 100% बिकॉज उनके माइंड में अभी वही है कि ये हम मेन स्टडी करें, इसी से हमें कुछ मिलने वाला है, यहाँ से स्किल से कुछ नहीं मिलने वाला है. लेकिन
आने वाले 5 से 10 सालों में इसका इम्पैक्ट पता चलेगा, बिकॉज इमीडिएट इम्प्लीकेशन जो होती है या इमीडिएट एप्लीकेशन किसी चीज की होती है, उसके रिजल्ट्स कभी भी इमीडिएट नहीं होते. इट विल ऑलवेज टेक 5 to 10 years फॉर इवन फॉर यूनिवर्सिटीज जो अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए भी एकदम उस चीज को अप्लाई करना और एकदम उस चीज को वर्किंग करना डिफिकल्ट है. तो डेटा तो वो क्रिएट कर सकते हैं, बट ऑन ग्राउंड वो So, इम्प्लीमेंटेशन नहीं no, है. I, स्कूल्स में भी okay, देखो तो नहीं है. no, I'll tell you one thing. Say when things are being under a government, that means either it's a government institute or aided institute. Aided matlab it's a private thing, but under the observation of the government. हम्म. Say like many schools under in a like private schools, they all would have हाँ, gone I under the understand. state हाँ. government. So वहाँ पे the one big benefit. I will go back to my school days for this one thing. मेरे स्कूल के नेक्स्ट कॉम्पाउंड में था डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टर एजुकेशन का ऑफिस. इवन नाउ दिस सिचुएशन. ओके, तो क्लास चल रही होगी एंड सडनली ही विल मेक अ विजिट. जो भी इंचार्ज है वो डिपार्टमेंट के, डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टर एजुकेशन जो सिटी के लिए दिए गए थे, लाइक उनको ऐसा है कि हाँ बस एक कॉम्पाउंड वॉल जंप करके आना है. इन मोस्ट ऑफ द स्कूल विद इन 1 kilometer ऑफ दिस ऑफिस. Suddenly he will make a visit. It will be like a surprise visit to monitor what's happening. So monitoring on a ground level. The first thing is government will have to stop privatization. क्योंकि ये सब जो किया गया था, it was done with a different. It is going to happen. मतलब धीरे धीरे that वो जो ये लगाम कसनी है ना इनकी, ये भी धीरे धीरे एकदम नहीं कर सकते, क्योंकि the government has to think about lot of things. अगर वोट ही नहीं मिले तो आगे आएंगे ही नहीं, तो करेंगे क्या, right? So that is also correct. Now, so one thing is this monitoring by government in a ground on a ground level basis. वो भी monitoring के लिए जो जाएगा ना, वो चाय पानी के लिए नहीं बैठेगा. ये करना, that is why, because अगर स्वच्छ भारत बनाना है ना, तो हर तरह से स्वच्छता करना पड़ेगा. हाँ, बट दिस इज वेयर द कंडीशनिंग कम्स अप ना. जो पहले वाले हैं और जो हम कंडीशन करके अब बनाएंगे, देयर विल बी अ डिफरेंस. दैट इज व्हाई आई सेड कि 5 से 10 साल कहीं नहीं गए, क्योंकि जो पहले वाले हैं या जो लोग अभी गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब्स में वाले हो, वन ऑफ द मेन थिंग इन देयर माइंड इज बस करके खत्म करो, मतलब कर दो, बस कर दो, कैसे भी कर दो, राइट. एंड वो चाय पानी के साथ पहले से कॉल करके बता देना. आई रिमेम्बर हमारे स्कूल के एग्जाम्स होते थे ना, तो फ्लाइंग आती थी कभी कभी चेक करने के लिए कि चीटिंग तो नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है. वो पहुंचने से पहले ही स्कूल में पता होता था कि आ रहे हैं, बिकॉज somebody would call them already, right? So वो जो बेसिक लेवल का चीज है ना, उसको, क्योंकि एवरीबडी कांट बी मोदी जी, या मोदी जी हर एक पे तो खुद नजर नहीं रख सकते हैं. तो वो बेसिक लेवल की जो सोच में बदलाव है, बेसिकली कॉन्शियस, योर कॉन्शियस, आपकी वो जो अंदर की आवाज, आत्मा की आवाज जिसको मार चुके हैं, right? Who is the person coming for the monitoring has to be a genuine. He has to be genuine. He can't be a corrupted person. That is why I said कि कम से कम 5 से 10 साल कहीं नहीं गए इस बदलाव को सेटल इन होने के लिए, because that is when people are changing. Even check points are changing. मतलब पहले तो कोई check point थे ही नहीं, तो अब check points भी change हो रहे हैं. and मैं आज ये चीज बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता 10 साल में 20 साल में अप्लाई होगी, बट आज के टाइम में जो गवर्नमेंट जॉब्स में भी है, where there are no checkpoints, कोई वो नहीं है, मतलब आए काम किया किया, नहीं किया नहीं किया, they are going to see something जो private jobs में हो रहा है. They are going to get ratings, they are going to get everything, scores and everything जो private jobs में होता है, and government jobs will become as tough as private jobs in coming years. So अभी धीरे धीरे तब्दीली होगी. Yeah. So just last 2 points I'll say. Now I go back to a student situation. We dream ka that is that students feel pressurized. When do you feel pressurized? You feel pressurized when you are doing something which you don't want to do. है ना, आप पे कोई फोर्स कर रहा है तुम्हें कुछ करने के लिए, be it a parent or from the school or whatever it is. You feel pressurized जब आपका वो आप कोई काम आप दिल से नहीं कर रहे हो, अपने मन से नहीं कर रहे हो. That is the stage when you feel pressurized.
So I think यहाँ पे दो factors है राधिका. it One has to come factor is from the students type. Yeah. हाँ, but one factor is that you don't want to do it, या आपका intention नहीं है, इसलिए you feel pressurized. दूसरा can also be that you don't have time for it. There is so much to do that you don't have time for it, and that's why you feel the pressure to put one extra thing. Yeah. No, I agree to it. Like, where there's going for multiple tuitions and other things. And why not? I mean, those things are obviously like a pressure for the kid, right? Exactly. मुंह खोल के बोल नहीं सकते अपने पेरेंट्स को, नहीं मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे ये मत करो. What is stopping you from opening up? नहीं करते ना parents नहीं ऐसे होते राधिका. That's where the problem is, that parents are also not conditioned. I can tell you मेरे अपने experience में, मेरी अपनी vicinity में somebody had committed a suicide, and parents, वो बहुत कोशिश करता रहा बच्चा अपने पेरेंट्स को समझाने की कि मुझसे नहीं हो रहा है. They wouldn't understand. They forced him everything. Finally when he committed suicide and he was no more, then the parents were crying कि हमें बोल दिया होता, हम समझ जाते. पर जब वो बोल रहा था ना, तब कोई नहीं समझ रहा था. तो नहीं होता, आप मुंह खोल के बोलो. पेरेंट्स बोलते हैं उसका बच्चा भी कर रहा है, उसका भी कर रहा है, तुम कौन से अनोखे हो. So root problem यही है कि बचपन से there is a disconnect. That disconnect should not be there between the parent and the तो वो student. जो फर्स्ट है ना, जो फर्स्ट सिचुएशन है जहाँ पे दोनों बात करते हैं, प्लस दूसरा एक और चीज जो कंडीशनिंग, यू हैव टू बी ट्रेन्ड हाउ टू बी द राइट काइंड ऑफ पेरेंट, जो नहीं है. लाइक जो मेरे साथ हुआ वो मुझे बच्चे के साथ करना है, या जो मेरे ड्रीम्स अधूरे रह गए मुझे अपने बच्चे से पूरे करवाने हैं. या एक और चीज जो एज अ टॉपिक मैं लेने वाली हूँ, दैट्स लाइक हम बच्चे पैदा क्यों करते हैं, because we see it is an investment of future. That's where the problem is. रूट कॉज जो है वो वही है कि वो कुछ बनेगा, कुछ करेगा और आगे जाकर हमें संभालेगा. तो बेसिकली हम बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं, हम एक इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं जहां से आगे हमें रिटर्न दिखता है, और उस रिटर्न के चक्कर में हम उसको अच्छी तरह पीसते हैं कि वो ये भी कर ले, वो भी कर ले, पैसे आए, कि कल को हम बूढ़े हो तो हमें संभाले. That's another problem. So I just want to end with this one example where one student of mine, he ended up creating an example, I will say, because he actually wanted to be a chef. वो hotel management करना चाहता था. But his parents wanted him to become an engineer. As a software engineer बनाना चाहते थे, but because of his marks or whatever it is, जो merit seat में उसको computer science में नहीं मिला, he joined for electronics. Okay. बट उसके मन में था कि मुझे कुछ करना है विथ रिस्पेक्ट टू शेफ बनना है. सो व्हाट ही डिड इज आफ्टर हिज जॉब, ऑब्वियसली ही जो ये प्लेसमेंट के थ्रू ही गॉट अ जॉब एंड ऑल दोस थिंग्स. बट व्हाट ही डिड इज he started like अपने ओर से he started like जैसे स्टार्टअप जैसे एक छोटा सा उसने शुरू किया. baking करके he started selling ovens and other things. So छोटा सा ही शुरुआत भले ही छोटी सी हो, so but parallelly he was able to take both. One was the dream of his parents and second one was his own dream. Now the thing like I like उसका जब like forward आते थे कि ये सब हो रहा है, and he also met me after like they come to collect the degree certificate. So COVID के time पे कोई there was no mass convocation and all, so they had to come and collect the certificate. So he collected the certificate and he came to meet me, and then he was saying, "I'm happy now, ma'am, because I'm doing both." Exactly. I'm fulfilling my dream and I'm also fulfilling my parents' dream. मैं दोनों कर रहा हूँ तो मैं खुश हूँ. Earlier that guilt was there that I was not able to do what I wanted to do, but now I am doing that. So actually lockdown जो time था वो उसके लिए actually it became a boon. He was able to उसी time पे उसने but they were getting lots of time in between and he was able to come into that thing. He was able to do that. So I know that it is not practically not possible for everybody to do in that way. So the only thing is, yes, the root cause ka samjho and try to resolve from the basics itself. Yes, that is very much required. See, I'll tell you because the
even I have seen students who have been, taking, like, who have been caught having drugs in the hostel, yeah, having some substances which they should not be having. जैसे वो कल news में आया था that it was found in a school bag, things which should. This was even for a girl. I'm saying, I'm not talking about boys. This is हाँ, बहुत आज के टाइम में दोनों बराबर हैं, दोनों टीम काम करते हैं। दोनों होते हैं, बट उनको जब जब उनसे बात की जाती है कि what is the situation, the thing is, जो पहला जो drugs case which I witnessed, which was happening in this particular college जहाँ पे मैं पढ़ाती थी, the thing was his father was a very big क्या बोलते हैं, बिजनेस वाले थे, ठीक है। वो मुंबई में काम कर रहे थे, एंड yeah, this guy had come to South for study and totally disconnected. उनको कोई फिक्र ही नहीं है, पेरेंट्स को कोई फिक्र ही नहीं है कि ये बच्चा क्या कर रहा है। हाँ, exactly. हमने उसका एडमिशन करा दिया, बस हो गया। अब now it is on him. No, that should not be the thing. And even the girl who was caught with those things in her bag, her situation, like, she doesn't come from a rich family, but she hides, she does all these things and she hides everything from the parents. वही ना, वो सारा रूट कॉज वही है ना, रूट कॉज वही है कि पेरेंट्स कनेक्टेड नहीं है। और एक और प्रॉब्लम जो पेरेंट्स के साथ होती है वो होता है रोल रिवर्सल। आप जब बच्चे से कोई सीक्रेट ओपन कराना होता है, कोई बात करनी होती है, दे बिकम अ फ्रेंड एंड दे ट्राई टू टॉक इट आउट, एंड एज सुन एज बच्चा वो चीज बता देता है ना, एकदम दे टर्न पेरेंट, फिर मार पिटाई, गुस्सा सब शुरू हो जाता है, तो बच्चा अगली बार के लिए डर जाता है। द चाइल्ड विल नेवर ओपन अप अगेन। I'll tell the so the most funny experience of this mentoring thing. So I was not the mentor, I was the class teacher during that year, and mentor कोई और थी। So एक जो थी, I'll try to close it. So एक जो थी, she was not attending, okay, and as usual issues started with respect to performance and attendance, and she was confronted by the teachers कि क्यों नहीं आए। So she said, नहीं, मेरा मन नहीं है, and all those things, and but they said, okay, we want to talk to your parents, dial your parents number. तो उसने क्या किया, हमारा एक बुक होता है, मेंटर बुक बोल के, उस बुक में they are supposed to give all the personal details, and has done is she gives a number. तो वो जो भी उसकी मेंटर थी, उसने वो नंबर डायल किया, and she talks to a person, okay, she says these are the issues, और and वो बोलते हैं कि आप एक बार आके हमसे मिल लो तो अच्छा रहेगा, वी वुड लाइक टू डिस्कस दिस थिंग एंड गेट इट रिजॉल्व। 2-3 बार हुआ एंड द पर्सन डिडंट टर्न अप, ओके। आफ्टर अ वीक और 2 द ट्रूथ कम्स आउट दैट शी हैड गिवन हर फ्रेंड्स नंबर, किसी और का ही नंबर उसने दे दिया था, वो पेरेंट का नंबर था ही नहीं। एंड ऑब्वियसली, as you say, finally when the parent got to know, when the parent came, there had to be a bitterness, because consciousness, like from your side, अगर आप already आपका मन नहीं है करने में, तो उसके ऊपर आप extra झूठ क्यों, extra why, what That's वही है ना, रूट वही आती है। इट इज ऑल हाउ अ पेरेंट इज। वही मैं अभी किसी ने लिखा भी ना, या अद्विका ने लिखा कि पेरेंट्स शुड बी ट्रेन्ड, और काउंसलिंग पेरेंट्स के लिए भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मनीषा वाज लाइक, हाउ कैन वी चेंज? सो वी कैन चेंज बाय कंडीशनिंग आवर चिल्ड्रन, आवर सिबलिंग्स, आवर पेरेंट, आवर फैमिलीज। वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। Yes, it's required on both sides. दोनों साइड में वो समझना बहुत जरूरी है, because you at one stage, as a teacher, I have a limit. I can't cross a particular limit. Absolutely. वो रूट कॉज वही है, और वहीं से उसका सोल्यूशन होना जरूरी है। So, like, say that first example where I said that she came saying that my parents are fighting every day, I don't know whether it will go for a divorce. I am not a person to go and tell them don't get divorced. Like, कौन होती हूँ कि हमसे ये सब बोल। Exactly. So there are things in which we can't interfere. So it has to come from between. There has to be a major solution between the parent and the kid only. And so I don't. So many will say that she is not married, so ये ऐसे बोली जा रही है। मैं सिर्फ एक टीचर के पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ। I'm not in that way. And मेरा जो
as a student जो मेरा भी चल रहा है. And another thing, हम्म, like वो कहते हैं ना कि if you know what you want to do, then you will हम्म, be able to do it. You will be able to reach to that goal. हम्म, Many find it difficult to get a goal in the beginning itself. But राइट. like everybody else, घर पे सारे रिलेटिव्स इंजीनियर और डॉक्टर, तो चलो हम भी लिख लेते हैं और मेडिसिन की एग्जाम. हाँ, ये वही वही वो हाँ, रूट कॉज वही है ना, सोल्यूशन वही है, दैट इट हैज टू बी हाँ. अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पेरेंट चाइल्ड, अ काउंसलर इज नीडेड एंड द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, एंड वहीं से सारी चीजें शुरू होती हैं, वहीं पे वी कैन फाइंड द सॉल्यूशंस आल्सो. even I had done that mistake, but then बचपन से वो कुछ, there was some kind of attraction towards space and that thing. And it was written in destiny that I was supposed physics, like मैथ्स में सबसे ज्यादा मार्क्स मैथ्स में था. मुझे ग्रेजुएशन के लिए मैं एडमिशन के लिए गई तो मुझे मैथ्स में पहले बुलाया गया था. They were like तुम कभी भी आ जाओ. I mean, they were like तुम मैथ्स में एडमिशन ले लो. I was like नहीं, मुझे फिजिक्स ही चाहिए. वही फिजिक्स में एग्जैक्टली. my number was it was not there was no guarantee whether I'll get an admission, क्योंकि मुझे वहां पे थोड़ा सा कम मिला था फिजिक्स में comparatively. So मैथ्स में like पूरा ये था कि नहीं तुम बीएससी मैथ्स ले लो. They were like so happy, they wanted me already. I was like नहीं नहीं नहीं, मुझे फिजिक्स में जाना है. हाँ फिजिक्स वाले एग्जैक्टली, वो आपका माइंड क्लियर हो तो ये फिर मतलब वो कि नहीं आ रहा है. एग्जैक्टली माइंड क्लियर हो Physics में तो. surety नहीं था. Like almost after waiting for 3 years, I got the admission. And then over time, I realized that yes, I can. There is something more, which is वो जो बोलते हैं ना, वो लक्ष्य चाहिए. वो if you see that goal, the student is able to see the goal. If the student is able to come to that stage, he or she will know where to एग्जैक्टली. go, how to go. That will happen. ओके. Unless that goal वो नहीं है ना, it will not work out. I don't want to bring a movie dialogue, इसलिए मैं जानबूझ के dialogue change करके English में बोलूंगी. So I'm using the word goal. वो actually movie का एक movie का dialogue हाँ, है. I know what you are saying. So But yeah, right. that vision should be there. If you know what you want to do, then it can happen. Like in that case of the boy, he knew that उसके दिल में ये था, उसने ठान लिया था कि ये मेरा पैशन ही है, हॉबी नहीं है, पैशन है, मुझे शेफ बनना है. Irrespective of me becoming an engineer, I will parallelly be a chef also. So Which is it is possible. It is possible. It's an एक ही impossible है. It is. absolutely. और मैंने बहुत टाइम खा लिया किचन लाइफ. अब किचन टाइम हो गया है. हाँ, मैं वही देख रही हूँ कि मुझे भागना पड़ेगा अब. तो आई विल सी यू गाइस टुमारो, एंड थैंक यू राधिका, थैंक यू सो मच. यू ब्रॉट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और हम लास्ट में सम अप करेंगे तो वी विल also talk about little more about that. ठीक है? Thank you so much. Thank you. Thank you so much to all of you. जो भी मैं YouTube में नहीं देख रही हूँ, कितने लोग stay back है. Thank you. ठीक है. Thank you Thank to all you. of you. Take care. Bye bye. And thank you, Shrikant. Finally, you made it happen. Thank you. Yeah, it's all his magic. ठीक है. Yes. Thank you. Yeah, Thank I you. love Okay, it. guys. I will see you tomorrow, and कल देखते हैं if we get to a topic or something, और मेरे को कितनी देर लाइव की मिलती है कल. But prayer तो we will do, and बाकी मैं लाइव का notification डाल दूंगी, तो we will see how it goes. ठीक है? Take care. Bye bye. Thank you and love you all. Thank you.